Self-help groups for the poor. Poor households are still dependent on informal sources of credit. Why is it so? Banks are not present everywhere in rural India. Even when they are present, getting a loan from a bank is much more difficult than taking a loan from informal sources. As we saw for Megha, bank loans require proper documents and collateral. Secondly, while farmer sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receive these loans. At present, it is the richer households who receive farmer credit, whereas the poor have to depend on the informal sources. It is important that the farmer credit is distributed more equally so that the poor can benefit from the cheaper loans. दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जरूर है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सके। मेघा, बैंक loans require proper documents and collateral. Absence of collateral is one of the major reasons which prevents the poor from getting bank from loans. Informal lenders such as money lenders on the other hand, now the borrowers personally and hence are often willing to give a loan without collateral. The money lenders even without repaying their earlier loans. निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं हैं। जहाँ कहीं मौजूद भी है, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल उनके लिए होता है। जैसा कि हमने मेघा के मामले में देखा, बैंक से कर्ज लेने के लिए उसे संपत्ति या दूसरी चीज़ें गिरवी रखना पड़ती है और साथ ही विशेष कागजातों की ज़रूरत पड़ती है। इनकी अनुपलब्धता पर एक प्रमुख कारण भी है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक यानी महाजन, साहूकार, ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना गारंटी के यानी बिना गिरवी संपत्ति या चीज़ों के भी ऋण देने के लिए दूसरी बार तैयार हो जाते हैं। कर्जदार ज़रूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज करने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं, लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखापढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते रहते हैं। In recent years, people have tried out some newer ways of providing loans to the poor. The idea is to organize rural poor, in particular women, into small help groups and pool यानी कि collect their savings. A typical saving help groups has 15 to 20 members, usually belonging to one neighborhood.
who meet and save regularly. Saving per member varies from rupees 25 to rupees 100 or more. After a year or two, if the group is regular in saving, it becomes eligible for availing loan from the bank. Small loans are provided to the members for releasing mortgaged land, for meeting working capital need, buying seeds, fertilizers, raw materials like bamboo and cloth, for housing material, for acquiring assets like sewing machine, handloom, cattle, etc. Most of the important decisions regarding the saving and loan activities are taken by the group members. The group decided as regards the loans to be granted, the purpose, amount, interest to be charged, repayment schedule, etc. Also, it is the group which is responsible for the repayment of the loan. Any case of non-repayment of loan by any one member is followed up seriously by other members in the group. Because of this feature, banks are willing to lend to the poor women and when organized in self-help groups, even thought they have no collateral as such.